Hello students, we are going to start about the new chapter, that is metals and non-metals. First of all, we'll see the introduction part. In that, we know that objects that we see around are made up of different materials and have a different properties. And all materials which are made up of the same kind of materials, which are known as pure substances. Elements and compounds are pure substances, and an element is the simplest and the purest form of substance made up of same particles called as an atoms. And elements cannot be split up into physical or chemical methods. Elements can be classified as metals, non-metals and metalloids depending upon their difference in their physical and chemical properties. These days, metals and non-metals are used to make different things such as tools, machines, vehicles, ships, jewelries and utensils. These all are the applications for the metals. Now we'll see one by one about what is metals, what is non-metals and metalloids. First of all, we know that metals are the elements that conduct heat and electricity are and are malleable as well as ductile. Sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, silver, gold are some of the examples of the metals. Now we'll see about what is non-metals. So in non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity. जिसके अंदर heat और electricity pass on नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? That is non-metals and are neither malleable nor ductile. What are malleable and ductility, that we'll see right now in this PPT. And they are brittle. Brittle means what? They are easily breakable. Malleable means what? They can be converted into thin sheets, and ductile they can be converted into thin wires. Okay, so for examples, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, chlorine, bromine are some of the examples of the non-metals. Now next we'll see about what is metalloids. Now metalloids are the elements which show the property of both metals as well as non-metals. दोनों की property हमें show करता है. That is said to be as in metalloids. So boron, silicon, germanium, arsenic are some of the examples of the metalloids. Right now we have seen what are the different types, that is metals, non-metals and metalloids. Now we'll see that how metals occurs. So first of all, we know that metals exist in abundance in the earth crust. Aluminium is the most abundant metal in the earth crust, followed by iron, calcium, sodium, potassium and magnesium in the decreasing order. Most of the elements are quite reactive and they do not form in free state. इसीलिए वो easily एकदम सिंपल फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहता है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है. तो उन they are combined, they are in combined states which are called as minerals. Minerals में क्या होता है? Mixture होता है अलग अलग elements के. And minerals are defined as solid, inorganic, natural occurring substances with a definite chemical formula and general structures. उनके कुछ particular chemical formulas रहेंगे और उनके structures भी available है, right? And therefore chemical elements in the earth crust are associated with at least one minerals. Metals can be extracted from the minerals for profitable uses. तो metals किस लिए extract किया जाता है? ताकि कुछ profit हो human को, right? Such rocks from which metals can be extracted for profitable are called as an ores. Ores available रहते हैं minerals में से, okay? So there are some examples given to you, that is hematite and iron pyrites, that is the ore of iron, and bauxite is an ore of aluminium. It means a kind of impurities will be there in that. Salts of metals such as sodium and magnesium can be found in sea water. The extractions of metals from the respective ores is called metallurgy. Metallurgy एक branch है जिसमें ये ores से related, mineral से related एक study किया जाता है. Okay, now we'll see that how non-metals do occur. And non-metals कौन से हैं? तो non-metals are oxygen, carbon, sulfur, hydrogen. They are all non-metals. In the previous one, you could see that hydrogen.
Hydrogen is the most abundant element which is present in the atmosphere in free state. It is represented, sorry, hydrogen is most abundant elements present on the earth, okay, not in atmosphere, okay. It is represented by the symbol H. It is the third most abundant after oxygen and silicon. Hydrogen is also the simplest of all the elements. It burns in air to or it burns in air or react with oxygen to form water. एयर के साथ रिएक्ट करके जलता है या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनता है. It exists in combined form with oxygen, petroleum, natural gas and coal. ये सब में ये सब present रहता है. Now next is nitrogen. Nitrogen occurs in the atmosphere in free state. हमारे atmosphere में सबसे ज़्यादा proportion nitrogen का available रहता है. Its chemical symbol is N. N से denote किया जाता है. It also exists in the form of nitrates in combined state. Next is ऑक्सीजन. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन दी अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट के लिए क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है. ओके, नाउ इट्स केमिकल सिंबल इज O. इट आल्सो अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर. इन कंबाइंड स्टेट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स. इस फॉर्म में ये अवेलेबल है. एंड सल्फर एग्जिस्ट इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है और कंबाइंड स्टेट में भी अवेलेबल है, सच एज सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स. नाउ विल सी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals. It is very important topic, and from this many types of questions can be asked. All metals are generally solid at room temperature. Most of the metals you will find that. metals की बात करूं, थोड़ा ध्यान देना. metals जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है. दैट इज मर्क्यूरी एंड गैलियम which are liquid at the room temperature. And some of the examples of the metals are iron, copper, aluminium, gold and silver, or more, and many more are there. And non-metals may be solid, may be liquid or a gas at a room temperature. तो वो फिक्स नहीं है, ठीक है. For example, carbon, sulfur and phosphorus as solid non-metals, तो वो solid है, okay. And liquid के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, that is bromine एक liquid है, bromine. And non-metal में is a liquid non-metal, whereas hydrogen, oxygen, nitrogen and chlorine are gaseous non-metals. Okay, next we'll see about the hardness and strength in metals as well as non-metals. Now many metals are found to be hard, such as iron, copper, aluminium, whereas some are soft. They can be cut with a knife, such as sodium and potassium. So most of the metals you will find that hard, बट एक्सेप्शन सारे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली एक्सेप्शन से ही बनते हैं. तो कौन से ऐसे मेटल्स है जो नाइफ से कट हो सकते हैं? दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच इज नॉन मेटल. नेक्स्ट विल सी अबाउट लस्टर. लस्टर से हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर उसका जो आउटर सरफेस होगा वो एकदम शाइनी होगा या फिर पॉलिश्ड होगा. पॉलिश कर सकते हैं, वैसा चमकता हो, जैसे आपने टाइल्स देखा हो, ठीक है. तो टाइल्स का जो ऊपर लेयर क्या है, शाइनी भी होता है और पॉलिश भी किया जा सकता है. सो मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज दे हैव अ वेरी शाइनिंग surface and can be polished, whereas non-metals are not lustrous nor do they have a shiny appearance except iodine and graphite. Iodine and graphite are the some of the exceptions in the non-metals. Now we'll see about next, that is malleability and ductility. This is very important topic. Okay, now what is malleability? The property by which a substance can be beaten into thin sheets. तो ये एक प्रॉपर्टी है मेटल में, अगर मैं उसे बीट करूं, हैमर्ड करूं, तो what will it do? It will convert into very thin sheets, that is said to be as an malleability. And the property by which a substance can be drawn into thin wires, जिससे हम wires में convert कर सकते हैं, that is we say as ductility. Metals are malleable as well as they are ductile, यानी कि वो thin sheets में भी convert हो सकते हैं और thin wires में भी convert हो सकते हैं. Best example is gold and silver. So gold and silver are the malleable and ductile material, that is metals,
Okay, here is correction, here meal is written, that is metals. Okay, then non-metals are neither malleable nor ductile. They are brittle, which means they can be easily broken when hammered. For example, sulfur, phosphorus are solid non-metals which are non-malleable and non-ductile. Okay, okay, there is two figures given to you. You could see that this left figure is a figure of one sweet that is said as Kaju Katri, right? You know that in that sweet ऊपर वाले एक शाइनी जैसा कुछ रहता है, एकदम शाइनी. व्हाट इज दैट? दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर. सिल्वर को एकदम थिन शीट्स में हैमर्ड किया जाता है और उसके बाद ऐसे सब स्वीट्स में यूज किया जाता है. तो आप से अब ध्यान रखना कि जो भी स्वीट्स के ऊपर सिल्वर कलर का तुम्हें दिखेगा, दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर शीट्स. दैट इज बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर. And the next figure, that is figure of wires. So you could see that copper wires. This is made up of copper. तो ये भी कॉपर भी एक मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. अब ध्यान देना, सिल्वर एंड गोल्ड आर गुड डक्टाइल मटेरियल्स. डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या? उससे थिन वायर्स बहुत इजीली बनाया जा सकता है. इसीलिए तुम देखना इससे ज्वेलरी आइटम्स बहुत ज्यादा बनता है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी. थोड़ा सा भी ले लोगे ना, बहुत किलोमीटर्स तक आप एक वायर्स ड्रॉ, थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हो. सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट इन आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के लिए हम वायर्स में क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज द रीजन इज दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी कॉस्टलियर मेटल, सो इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अ पर्सन टू यूज दैट. तो इसीलिए कॉपर इजीली और थोड़ा चीपेस्ट मटेरियल है, इसीलिए हम कॉपर को वायरिंग की तरह यूज करते हैं. बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन बहुत इजीली होता है. Now one experiment I'll say you that how to investigate the malleability and ductility of elements. कैसे तुम चेक कर सकते हो? So let us take one aluminum wire, iron nail, lead pencil and coal piece, कोयला का टुकड़ा लिया और हैमर लिया. Now what we will do, aluminum wire और iron nail को मैं अगर हैमर करता हूँ continuous, तो after a long period of time you will find that धीरे धीरे शीट्स बनना चालू हो जाता है. Okay, but if I try to hammer the पेंसिल लीड, यानी कि पेंसिल का जो ग्रेफाइट पार्ट है वो अगर मैं बीट करना स्टार्ट करूं हैमर से, तो व्हाट दे विल डू? दे विल ब्रेक इट डाउन बिकॉज दे आर डक्टाइल. वेरी इजीली दे कैन ब्रेक इट डाउन, नॉन डक्टाइल मटेरियल्स. वेयर एज कोल पीस भी कभी अगर हैमर करूंगा तो भी सेम वही चीज होने वाला है, दैट इट विल ब्रेक इट डाउन. सो फ्रॉम दिस वी कुड से दैट द मेटल्स आर ductile as well as malleable, whereas non-metals are neither malleable nor ductile. Now we'll see about sonorous. Sonorous you might have already studied, that is it will produce some sound. So metals are sonorous and produce a sound on striking with an object. So metal को अगर कोई भी object से hit करते हैं तो sound produce होता है. It is due to this property that metals are used for making bells and strings of musical instruments such as violin and sitar. Okay, now non-metals are non-sonorous, that is they do not produce sound when they hit on an object. तो non-metals में sound produce नहीं होता है. Next is melting and boiling points. This melting and boiling points of metals have a very high melting and boiling points, except there is some exception over here, that is sodium and potassium. Sodium and potassium are the exception in the case of melting and boiling of metals, whereas non-metals have low melting points and low boiling points. And there is also exception in non-metal, that is a diamond. Okay, next topic is about density. So what is density? So density means what? How much heavy they are. The metals are generally having very high density. Metals में जो density होगा बहुत ज़्यादा होगा, whereas non-metals have low densities. उसमें भी कुछ exception है. Sodium and potassium metals have high low densities, whereas non-metals are light. Non-metals में कोई भी exception नहीं है, but metals में कुछ exceptions है, that is potassium and sodium. Next is about thermal conductivity. What is thermal? Thermal means what? Heat. Conductivity मतलब क्या? Transfer हो रहा है कि नहीं. Heat conductivity है कि नहीं, that we are going to see in metals whereas in non-metals also. Now
मेटल्स में कैसे होता है, विल चेक दैट. इफ यू टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड इन इट, अगर मैं उसके अंदर बीकर के अंदर गर्म पानी डाला और एक आयरन रॉड भी अंदर रख दिया, तो थोड़े टाइम के बाद तुम्हें ये नोटिस होगा कि वो आयरन रॉड भी ऊपर का वो वाला जो पोर्शन है वहां पे भी हीट जनरेट होने लगा है. तो दैट इज how it can be possible, because metals are good conductor of heat energy. Thus this property of most of the metals to conduct heat is called thermal conductivity. It is due to this property that metals like copper, aluminium and iron are used for making utensils. Utensils क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फटाफट heat transfer हो जाता है. Okay, and because of that we use it for making utensils. Whereas non-metals are insulators. What is insulators? Insulator means what? They do not conduct electricity. Okay, now they do not conduct easily heat. They do not conduct heat. Okay, because of that they do not conduct heat. And next is about electrical conductivity. Now this electrical conductivity we'll look at by an example. We'll make a circuit. You could see that there is one circuit, battery है, bulbs है, switch है और एक wire के साथ सब connected है, right? There is point A and B. तो उस पॉइंट ए और बी में अगर मैं मेटल को रखता हूं, यानी कि कोई भी एक मेटल पीस लगा के देखता हूं और उसे ज्वाइन करता हूं ए और बी के साथ, एंड इफ आई स्विच इट ऑन, व्हाट विल हैपन? द बल्ब विल ग्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लोइंग नेचर वी विल से दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और अगर उसी के जगह में अगर मैंने वुड रख दिया तो क्या वो बल्ब जलने वाला है? नहीं जलेगा. इट मीन्स that wood is a bad conductor of electricity. From this we conclude that metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are very bad conductor of electricity. इसीलिए तुम देखना कि मेटल्स को ही हम यूज करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर वायर्स मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम वायर्स. ओके, सो metals are used in electrical conductivity. So in this we have seen physical properties, and in the next video we are going to see the chemical properties of metals and non-metals.